बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और खूब स्टडी में मसरूफ़ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल वी विल डिस्कस दी प्रीवियस लेक्चर समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, we have discussed in the previous lecture book value per share, stock options, restricted stock, and we have discussed the stock appreciation rights, and we have solved the various practical problems. And today we will solve the various practical problems related to the previous two lectures contents. एंड यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पिछले दो चैप्टर्स में हम जितनी रेशियोज पढ़ी उन सब की प्रैक्टिस हम आज करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड वी विल रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। कंपैरेटिव डेटा फॉर एल्बर्स ऑटोमोटिव फॉर द 2 year ended period 2009 and 2010 are presented. You can see, first of all, data is related to the income statement data. Net sales for the year 2009 and 10 is given. Cost of goods sold is here, and gross profit is given for year 2010 and 9. Operating expenses are also given, and operating income is also given. Other expenses also given in the question. Earnings before income tax is given. Income taxes and net income is given. Dividend payment is given, and net increase in retained earnings also given for the year 2010 and 2009. Question is continued. Now this portion is related to the balance sheet items of the company. First of all, assets of the company are given. Cash, receivables net. Receivable net means all types of bad debts and provisions for bad debts is subtracted from the receivables, and inventory is given. Land, building and equipment of the company is also given in the question. Intangible assets are given. Liabilities and stockholder equity of the company is given. Under the heading of liabilities and owner's equity, trade notes and accounts payable is here. Miscellaneous current liabilities are also given, and long-term liabilities like 5% bonds payable are given. Common stock $10 per par value is given, and additional paid in capital is also given in the question, and retained earnings are also added in the owner's equity side. Today's students' question is continued. We need to find out the various items, but first of all we will say the note. Market price of stock at the end of each year is given. $81 for year 2010 and $68 market price for year 2009 is given. What are the requirements? First of all, we will need to calculate the net profit margin, total asset turnover, return on assets, operating income margin, operating asset turnover, return on operating assets, and return on investment, return on total equity of the business, basic earning per share, and we will calculate the degree of financial leverage, price earning ratio, dividend payout ratio, and dividend yield. B requirement is perform a DuPont analysis for both years
using both net profit and operating income, comment on the results. C part is related to the comment on the trend in profitability as indicated by the ratios are given. Fourth requirement is why is return on investment lower than return on equity. Last requirement is describe the firm's dividend policy. Could this be related to market price? Now we will solve the all ratios one by one. First of all, we will solve the net profit margin. Net profit computation of net profit margin. That is first requirement. Net profit margin formula is here. Net income before non-controlling interest and non-recurring items divided by net sales. तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पे वापस जाएंगे और डेटा वहां से हम लेंगे. Net income is given 109,000 for year 2010 and 99,000 for year 2009. First of all, we will calculate for year 2003, 10, then 2009. Net income is 109,000 and 99,000 for year 2009. Now we can take the sales. Net sales are 1.5 million for year 2010 and 1.2 million for year 2009. 1.5 million and 1.2 million. कैलकुलेटर आपके पास है. उम्मीद है कि आपने कैलकुलेटर परचेज कर लिया होगा. सिंपल कैलकुलेशन है. डिवाइडेड बाय 1.5 million multiplied by 100, that is 7.27%. Okay. Next calculation is 99,000 divided by 1.2 million multiplied by 100, that is 8.25%. What shows that basically in 2010 net profit margin has decreased if you can compare with the year 2009, because in 2009 net profit margin was 8.25. In 2010 that is 7.27. This is not good for the business. Now we need to calculate another ratio, that is total asset turnover ratio. Total assets turnover is equal to net sales divided by total assets. Net sales for year 2010 is given, that is 1.5 million, 15 lakh, or for 2009 total assets turnover is equal to net sales divided by total assets.
तो नेट सेल्स आपकी 2009 की भी गिवन है, दैट इज 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स भी हम क्वेश्चन से ले लेंगे, दैट इज 1 मिलियन एंड 0.78 million. For year 2010, 1 million and point. So dear students, we have taken the amount from the question. Net sales is 1.5 million divided by 1 million are total assets for year 2010 and 1.2 million net sale for year 2009 divided by total assets 0.78 million. तो कैलकुलेटर आपके पास है, सिंपल कैलकुलेशन आप कर लें, डिवाइडेड बाय 1 मिलियन 1.5 times per year. Dear students, already we have discussed about the all turnover. Always turnover should be given in times. Now we can calculate for year 2009. 1.2 million divided by 0.78 million, that is 1.54 times per year. That is total assets turnover for year 2009 and 10. Now we will calculate another ratio, that is return on assets. Formula is here, return on assets is equal to net income before non-controlling interest and non-recurring items divided by total assets. Net income before non-controlling interest and non-recurring items also given in the question, that is 109,000 for year 2010 divided by total assets are also given 1 million for 2010. इसको आप डिवाइड कर लें, 109,000 divided by 1 million multiplied by 100, that will be 10.9%. तो क्या हुआ कि रिटर्न ऑन एसेट्स जो है, जो हमने एसेट्स एम्प्लॉयड की हुए बिजनेस में, हमारा रिटर्न उसके ऊपर 10.9% है. नाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर ईयर 2009 very easily. Formula will be the same, just we need to put amount for the year 2009. And net income for year 2009 is 99,000 divided by total assets for year 2009 is given 0.78 million, 7,80,000 डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100, 0.78 million multiplied by 100, that will be 12.69%. So dear students, if you can see, we have calculated the return on assets for the year 2010 and 2009. Now we will calculate another ratio, that is operating income margin. Computation of operating income margin is equal to operating income
divided by net sales और मल्टीप्लाई बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग इनकम हम क्वेश्चन से ले सकते हैं। क्वेश्चन में जाएं वापस और देखें कि ऑपरेटिंग इनकम कहाँ गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग इनकम इज फॉर ईयर 2010 दैट इज 190,000 and 182,000 for year 2009. 190,000 for year 2010 divided by net sales. Net sale is given for year 2010 is 1.5 million. Divide कर लें 190,000 divided by 1.5 million multiply by 100, that will be 12.67%. It shows that your operating income of sales is 12.67%. Now we will calculate the for year 2009. Operating income for year 2009 is given, that is 182,000 formula will be the same, divided by net sales. Net sales also given for year 2009 1.2 million multiply by 100. That will be 1.17%, 15.17%. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ऑपरेटिंग इनकम मार्जिन फॉर ईयर 2009 एंड 10. नाउ वी विल कैलकुलेट अनदर रेशियो, दैट इज ऑपरेटिंग एसेट्स टर्नओवर. ऑपरेटिंग एसेट्स turnover is equal to net sales, very simple formula, divided by operating assets. Dear students, formula will be the same for year 2009 and 2010 when you are calculating the operating assets turnover. तो net sales given है for year 2010, that is 1.5 million divided by operating assets. We can take the amount from question. Operating assets, that is 1 million minus intangible assets 20,000. When you are calculating the operating assets, you need to subtract the intangible assets from the total assets. Intangible assets is not part of the operating assets. तो operating assets means minus आप करेंगे 1 million, आपके total assets minus 20,000, जो हम subtract करें that is intangible assets. और you know about the intangible assets that are goodwill, patent, copyright, etc. कैलकुलेट कर लें 1.5 million divided by 9,80,000, that will be 1.53 times. पहले भी आपको बता चुका हूँ, ऑल टर्नओवर जो है इट शोज दैट इन टाइम्स. नाउ we can calculate operating asset turnover for year 2009. Formula will be the same. Net sales for year 2009 is 1.2 million divided by operating total assets आपके given है, वो कितने हैं जी? That is 7,80,000 और माइनस करेंगे 20,000. 7,80,000 total assets minus 20,000 intangible assets are the same
in year 2010 and 2009 divided by 760,000, that will be 1.58 times per year. तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी और आप कर भी रहे होंगे। तो प्रैक्टिस, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप इन फार्मूला को याद करना चाहते हैं तो रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ब खुद आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो इन बातों में आप ज़रूर अमल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन कैलकुलेट अनदर रेशियो, दैट इज रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट्स। Return on operating assets is equal to operating income divided by operating assets. So dear students, operating income is given for year 2010 and 2009, that is 190,000 for 2010 divided by operating assets. Operating assets हमारे पास हैं, वो कैसे आएंगे? 1 million for year 2010 divided by, पहले आप माइनस करेंगे इंटेंजिबल एसेट, दैट इज 20,000, तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 190,000 डिवाइडेड बाय 9,80,000। (19.39%). That is the return on operating asset for year 2010. Now we will calculate the return on operating asset for year 2009. Formula will be the same. Return on operating assets is equal to operating income divided by operating assets. So dear students, operating income is given for year 2009, that is 182,000 divided by operating assets are also given for year 2009, 780,000 minus 20,000 intangible assets, 182,000 divided by 760,000, that is 23.95%. That is return on operating assets for year 2009. Dear students, now we will calculate another ratio, that is return on investment. Return on investment is equal to net income. Formula will be the net income minus plus interest into 1 minus tax rate divided by long term debt plus stockholders इक्विटी। तो डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होगा नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ रहिएगा।
First of all, we need to calculate the various amounts for this formula. Interest is given in the question for year 2010 and 2009, $109,000 and $99,000. Interest is given, you can see. Then earnings before tax is $15,000 and $12,000 for year 2009, and income tax is given $175,000 for year 2010 and $170,000 for year 2009 is given, and tax rate is 37.7% for year 2010 and 41.8%. Then interest plus 1 minus tax rate. 1 minus tax rate means for year 2010 1 minus 37.377, remaining will be the 62.3%. Now for year 2009, 1 minus 0.418 is equal to 58.2%. पहले आप 1 में से टैक्स रेट को माइनस कर देंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा. दैट विल बी 62.3% एंड 58.2%. नाउ net income plus interest into 1 minus tax rate that will be 9345 for year 2010, 6984 for year 2009. Then long term debts is given 118,345 and 105,984. Then stockholders equity is given in question. You can see stockholders equity is given. Dear students, 3 types of stockholders equity is given. 100,000 is common stock plus 51,000 additional paid in capital plus 399,000. So total will be the 550,000 for year 2010. So you can calculate easily 550,000 and 400
89,000 for year 2009. You can see in the question, if you can see, common stock for year 2009 is given 100,000, 51,000 is additional paid in capital plus 38,000. तीनों को जमा करेंगे तो that will be $489,000. Now we can calculate long term debt plus stockholders equity. क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड अप कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 850,000 and 729,000. तो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे हम लिखना भूल गए, ये है 300,000 and 240,000 फॉर ईयर 2009. तो जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा $729,000. Now we can calculate easily return on investment. What was the formula? Net income into plus interest into 1 minus tax rate is given. That is 118,345 divided by 850,000. Divide कर ले 118,345 divided by 850,000. That will be 13.9%. Now we can calculate for year 2009. Income is given 105,984 divided by 729,000. Long term debt divided plus shareholder equity. 105,984 divided by 729,000. That will be 14.54%. तो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आपने देखी कि हमने अमाउंट्स कैलकुलेट की. सबसे पहले इंटरेस्ट लिखा, वो जो कि इंटरेस्ट अगर गिवन नहीं है तो हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, 5% बॉन्ड है तो 300,000 हमारे बॉन्ड की वैल्यू है. 5% आप लेंगे तो दैट विल बी 15,000. दैट विल बी 15,000. और फिर हम 2,40,000 के ऊपर 5% लेंगे तो वो भी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स, we need to find out the return on investment. First of all, we will calculate the basically net income plus interest into 1 minus tax rate divided by long term debt and plus stockholders equity. First of all, we have calculated these values. You can see long term debt plus stockholders equities are given 850,000 plus 729,000 for year 2010 and 2009. Then we can calculate return on investment very easily. So dear students, next ratio is return on total equity. Return on total equity. Formula is net income before non-recurring items minus dividends, redeemable preferred stock divided by total equity. तो डियर स्टूडेंट्स, नेट इनकम हमारे पास गिवन है
for year 2010, that is 109,000 divided by total equity हम देख लेते हैं क्वेश्चन से. फर्स्ट ईयर की यानी कि 2010 की अगर हम तीनों को ऐड करें दैट इज 550,000, तो 550,000 से हम डिवाइड कर देंगे. और इसी तरह नेक्स्ट ईयर की भी हमारे पास नेट इनकम गिवन है, वो क्या है 99,000 डिवाइडेड बाय 489,000 टोटल इक्विटी. ये कहाँ से आई डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट के आइटम में आप जाएं तो आप तीनों आइटम्स को ऐड अप कर लें. 100,000 इज कॉमन स्टॉक एंड एडिशनल पेड इन कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स, तो दैट विल बी 489,000. कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें. 109,000 डिवाइडेड बाय 550,000, 19.8% and that is 20.2%. तो लिहाजा हमने रिटर्न ऑन टोटल इक्विटी भी फाइंड आउट की फॉर ईयर 2010 एंड 2009, that is 19.8% and 20.2%. It shows that return on equity has decreased in 2010. Now we will calculate another ratio, that is basic earnings per share. Computation of basic earnings per share is equal to net income minus preferred dividends divided by average number of common shares outstanding. तो डियर स्टूडेंट्स नेट इनकम हमारे पास गिवन है लेकिन प्रेफर्ड डिविडेंड्स हमारे पास गिवन नहीं है. दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू सबट्रैक्ट द प्रेफर्ड डिविडेंड्स. फॉर ईयर 2010 that is 109,000 is related to the net income divided by average number of common shares outstanding. वो हम क्वेश्चन से देख सकते हैं. So dear students, we can calculate the number of shares outstanding very easily. How it is? Value is given 100,000 common shares divided by 10 par value, that will be 10,000 shares. कैसे कैलकुलेट की हमने 100,000 वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 par value, that is 10,000 shares. तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड कर लेंगे, सिंपल है. 109,000 divided by 10,000 shares, that is 10.99 earning per share. So dear students, now we can calculate for year 2009. Earning is given, that is 99,000. Formula will be the same, divided by 10,000 shares, that these are the constant. To $9.90 earning per share of the company. Now we will calculate another ratio, that is degree of financial leverage. Degree of financial leverage
is equal to earnings, formula will be the before interest, taxes, minority share of earnings, equity items, income, and non-recurring items divided by earnings before tax minority share of earnings that is the formula. तो डियर स्टूडेंट्स अर्निंग्स हम क्वेश्चन से ले लेंगे. क्वेश्चन में गिवन है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स इज that is 190,000. Basically we will consider the operating income will be the earning before interest, taxes and minority share of earning 190,000. And we will consider the earning before income tax, that is earning before income tax is 175,000. सिंपल कैलकुलेशन है, डिवाइड कर ले 190,000 डिवाइडेड बाय 175,000. That will be 1.09 financial leverage. Now we can calculate for year 2009 easily. That is 182,000 divided by 170,000. 182,000 formula will be the same, divided by 170,000. Financial leverage will be the 1.07. तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी क्या थी फाइनेंशियल लेवरेज. नाउ वी विल कैलकुलेट अनदर रेशियो, that is price earning ratio. Very simple, price earning ratio is equal to market price, ये फार्मूला है इसका, डिवाइडेड बाय बेसिक अर्निंग्स पर शेयर. अभी हमने बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट की थी इससे पिछली वाली रेशो में. तो मार्केट प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन सी $81 and $68 फॉर ईयर 2010 and 9. $81 for 2009 and $68 for 2009 and 81 for 2010. तो पिछली रेशो से आप देख लें, that is 10.9 and 9.9. तो इससे आप डिवाइड कर दें, 81 डिवाइडेड बाय 10.9 7.43. Price earning ratio will be for 2010, 68 divided by 9.9 for 2009, 6.87 times. ये भी टाइम्स में आएगी. नेक्स्ट रेशियो इज डिविडेंड पे आउट रेशियो. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू, फार्मूला विल बी दी डिविडेंड per common share divided by earnings per share
So dear students, dividend per common share ratio given in question. Already we have solved it. Dividend per common share is given 4.80 divided by earning per share is 10.90 for 2010 and 4.20 for year 2009, 9.90 for year 2009. सिंपल आप इसको डिवाइड कर लें. 4.80 divided by 10.90, that will be 44%, and next year 4.20 divided by 9.90, that will be 42.4%. तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारी डिविडेंड पे आउट रेशियो थी. नाउ वी विल कैलकुलेट अनदर रेशियो. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कैलकुलेट अनदर रेशियो, दैट इज we can see in question dividend yield. Dividend yield is equal to dividend per common share divided by market price per common share, already given. We can calculate for year 2010 and 2009. 4.80 dividend common share is given for year 2010 and 4.20 for year 2009. Market price is given for 2010, that is $81 and $68 for 2009. We can calculate very easily. 4.80 divided by 81, that will be 5.9%, and we can calculate for year 2009 4.20 divided by 68, that will be 6.2%. Very simple calculation. Now we can calculate another ratio, that is, ये हमारी बल्कि लास्ट रेशियो थी. नाउ वी विल कैलकुलेट बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? परफॉर्म अ डू पॉइंट एनालिसिस फॉर बोथ ईयर्स यूजिंग बोथ नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग इनकम. कमेंट ऑन द रिजल्ट्स आल्सो. नाउ वी विल कैलकुलेट द ड्यू पॉइंट एनालिसिस फॉर ऑपरेटिंग एंड नेट इनकम. बी पार्ट, ड्यू पॉइंट एनालिसिस. Formula is here. Return on assets is equal to net profit margin multiplied by total assets turnover. Everything we have calculated already. Very easy. Already we have calculated the return on asset, net profit margin and total assets turnover. Just we need to take the amount from solution. Already we have solved it. For year 2010, return on asset is 10.9% and net profit margin is 7.3% and 1.50 total asset turnover. Just we need to multiply the net profit margin multiplied by total asset turnover. Result will be the return on assets. Same we can do here. 2009 12.7% is equal to 8.3% multiplied by 1.54%. That is very simple two-part analysis. In case of net profit margin, now we will calculate the two-part analysis for the operating income. Formula will be the same. Return on assets
is equal to operating income margin multiply by operating assets turnover ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं सब कुछ, जस्ट हमने लिख देना है 2010 19.4% is equal to 12.7% multiplied by 1.53 for year 2010. Same like that in 2009, 15.2% is equal to 15.2% multiplied by 1.58. Very easy DuPont analysis. You can see. Now we can calculate and we can discuss the DuPont analysis. Basically, requirement was the comment on the DuPont analysis. Basically, rounding may cause slight differences from year 2009 to 2010. Both return on assets and return on operating assets have declined. This is caused by both a decline in margin and turnover. The majority of the decline due to margin. Now we can discuss another option, that is C part. Comment on the trend in profitability as indicated by the ratios given. C part we can discuss. Although absolute profit has increased, most relative measures of profit have declined. A faster rise in sales than profits has caused a decline in both profit margins. Turnovers have declined slightly. Now, dear students, returns on investment and equity have declined due to faster rises in the basis than its profits. Earning per share have increased. The degree of financial leverage is risen slightly. The rise in market price has increased the price earning ratio of the business. This is a good sign of investor confidence, and dividend payout ratio is up slightly, but dividend yield is down due to the higher market price of the shares, and book value has risen, but it is still lower than the market price. To these students, what about the D part? What is the requirement in D part? Why is return on investment lower than return on equity? We can discuss. D part is related to the return on investment is lower than return on equity of the business because the cost of debt is lower than the cost of equity. And what is the E basically analysis? The firm has increased its dividend faster than the earnings as evidenced by rising dividend payout ratio. This may have helped cause the rise in market price of the shares. Now, dear students, we can solve another problem. Another problem is in front of you. Data is given. We need to calculate the various ratios like earning per share. First of all, we will calculate the earning per share. बड़ी जल्दी से करें, टाइम बहुत कम है आपकी क्लास का, और इंशाल्लाह हमने क्लास के अंत तक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि फार्मूला आपको याद है, प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, तो ज़रा तेज़ी से मेरे साथ
ये क्वेश्चन सॉल्व करें। नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स divided by common shares outstanding. तो डी स्टूडेंट, डेटा में सब कुछ गिवन है। देखें क्या क्या क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है। नेट इनकम इज 50,000 और 3200 आपके प्रेफर्ड डिविडेंड्स है। 50,000 minus 3,200 divided by common shares outstanding are 40,000 shares। तो आप इसको डिवाइड कर लें। 50,000 minus 3,200 divided by 40,000, that is 1.17 पर शेयर। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्निंग पर शेयर है। नेक्स्ट रेशियो इज डिविडेंड पर शेयर बेस्ड ऑन एंडिंग शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर नंबर 2, फार्मूला विल बी दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। Dollar is 0.14, 0.14, 0.15, 0.15। ये जनाब डिविडेंड पर शेयर है आफ्टर दी सेपरेट ऑफ दी शेयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वार्टर में 0.28, क्योंकि आप देखिए अगर कॉमन स्टॉक वाज सेपरेट फॉर 2 for 1, the common stock dividends were declared and paid as follows। तो ये स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में हमने क्या किया कि स्टॉक सेपरेट किया। तो इसको जिस प्रोपोर्शन से शेयर्स बढ़ेंगे उसी प्रोपोर्शन से प्राइस कम होगी। तो 0.82 को 2 पे डिवाइड कर देंगे 0.14 और 0.28 को 2 पे डिवाइड करेंगे 14। तो 15 में कोई फर्क नहीं पड़ा, इस वजह से हमने भी इसको डिवाइड नहीं किया। तो ये सिंपल हमारी प्राइस थी बेसिकली डिविडेंड की, डिविडेंड पर शेयर। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू अर्निंग before interest and taxes divided by earning before taxes। तो डियर स्टूडेंट्स, वो गिवन है हमारे पास अर्निंग 120,000 डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्सेस इज $90,000। Simple calculation, 120,000 divided by 90,000, that is 1.33, that is degree of financial leverage। Very simple calculation। Now we can calculate another ratio, that is percentage of retained earnings। Very simple, percentage of retained earnings is equal to net income minus dividends, यानी कि all dividends divided by net income। तो डियर स्टूडेंट्स, डिविडेंड भी गिवन है और नेट इनकम भी गिवन है। तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन यू कैन सी इन दी डेटा, दैट इज क्वेश्चन में देख लें। नेट इनकम इज 50,000 एंड डिविडेंड इज गिवन 3,200
एंड 23,200 आप देख सकती हैं। प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड्स 8% पार वैल्यू, यानी कि 40,000 का आप 8% लेंगे तो 3200 आएगा। और आपका कॉमन स्टॉक का डिविडेंड 10 पार वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो भी आपका गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, जस्ट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दी डिविडेंड्स फ्रॉम नेट इनकम 50,000 माइनस 3200 प्रेफर्ड माइनस 23,200 कॉमन डिवाइडेड बाय 50,000। सिंपल कैलकुलेशन कर लें आप। 50,000 माइनस 3200 माइनस 23,200 divided by 50,000, that is 47.2% will be the percentage of retained earnings. Now we can calculate another ratio, that is dividend payout ratio. Is equal to dividends per common share divided by earnings per share. Already we have calculated. Dividend per common share is given 0.58 divided by earning share हम निकाल चुके हैं 1.17। तो आप डिवाइड कर लें 0.58 डिवाइडेड बाय 1.17 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी 49.57%। तो डियर स्टूडेंट्स, डिविडेंड पेड रेशियो भी बहुत सिंपल है। सिंपल हमने क्या किया, डिविडेंड पर कॉमन शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे, तो हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारे पास 49.57% आ गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट अनदर रेशियो, दैट इज डिविडेंड यील्ड। Dividend yield is equal to dividends per common share divided by market price per share। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। डिविडेंड पर कॉमन शेयर इज गिवन 0.58। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मार्केट प्राइस दैट इज $18, यू कैन सी 0.58 डिवाइडेड बाय $18, तो इसको डिवाइड कर लें 0.58 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी 3.22%। That is called dividend yield. Now we can calculate another ratio, that is price earning ratio. Price earning ratio is equal to market price per common share divided by earnings per share। तो डियर स्टूडेंट, मार्केट प्राइस पर कॉमन शेयर इज गिवन $18 और अर्निंग पर शेयर हमने प्रीवियस में कैलकुलेट की, तो दैट इज 1.17। सिंपल इसको डिवाइड कर लें, 18 डिवाइडेड बाय 1.17, दैट इज 15.38 टाइम्स। तो ये हमारी है प्राइस अर्निंग रेशियो। नाउ वी कैन कैलकुलेट अनदर रेशियो, दैट इज बुक वैल्यू पर शेयर।
book value per share is equal to book value per share is equal to common equity divided by common shares outstanding. So dear students, we need to calculate the amounts. First of all, beginning inventory, retained earnings, that is $170,000 plus net income 50,000, that will be 220,000 minus dividends 26,400, that will be 193,600 plus common stock, that is 200,000 and additional paid in capital प्लस करेंगे इसमें paid in capital, that is 160,000, सबका टोटल कर लेंगे, that will be 553,600 is total common equity, राइट। और कॉमन शेयर्स आर गिवन 40,000, हम इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे लिख लें मार्केट फार्मूला था कॉमन इक्विटी, दैट इज 553,600 डिवाइडेड बाय 40,000 शेयर्स। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द बुक वैल्यू पर शेयर, 553,600 divided by 40,000, that is 13.84 डॉलर पर वैल्यू। तो क्या आ जाएगी जी, बुक वैल्यू इज $13.84। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारा क्वेश्चन। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे किए। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आज के समझ आ गए होंगे, कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। तो आप भी इसी तरह मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे ग्रिप हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा कल मुलाकात होगी नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ, तो आप इंजॉय करेंगे। मैंने जैसा कि आपको शुरू में कहा था कि हमारा 85 to 90% पोर्शन न्यूमेरिक पोर्शन है, तो आपने देखा कि हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल के ऊपर तवज्जो देते हैं। सबसे पहले हम उसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं, फार्मूला डिस्कस करते हैं, देन हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं, और इंशाअल्लाह ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।